जी, ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि हम बाकायदगी से इलाज कराएं, तो ब्लड कैंसर का पाकिस्तान में अच्छा इलाज मौजूद है जी। टोटल ड्यूरेशन 3 साल की होती है, ठीक है? 3 साल में 3 साल के अंदर, ठीक है? 3 साल के अंदर हमारे ठीक है, ठीक है, चलें आप बाकी ठीक है। जी डॉक्टर महीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपने हिस्ट्री को कंपाइल कर लिया आपने? जी सर। कर लिया, चलें ठीक है। डिस्क्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ 15 मिनट्स रहेंगे क्लास के। हम जल्दी से हिस्ट्री सुनेंगे और उसके मुताबिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है? Patient Mohammed Ahmed, 8-year-old, resident of modern town Lahore, has been admitted to a private setup for the last 3 days. The historian is father, and according to him, he was in the usual state of 5 to 6 months back when they noticed multiple glandular swelling in his neck and axilla. That increased in size progressively and were not associated with any redness, discharge, or any pain. However, it was associated with fever, which was for the last 3 months, which was documented but low grade, intermittent and relieving medications. Fever was associated with night sweats, easy fatigability, and bone and joint pains. But there was no association with any fits, cough, abdominal pain, vomiting, diarrhea, or urinary complaints, and no association with any petechiae or bruises on the body. The patient has been there is no history of TB contact or animals in the house, and there is no significant radiation exposure suggested in the history. The patient has been investigated in the form of blood test, CT scan, ultrasound, and bone marrow biopsy, upon which the diagnosis of leukemia was made, and further investigations on the bone marrow sample are awaited. And he is currently admitted in a private setup, waiting for his treatment to be started. Meanwhile, he has been transfused once with 250 ml of blood, which was arranged by themselves, and there was no adverse reaction associated with his transfusion. There is no history of any gum swelling or any shortness of breath and the patient was born to a non-related parent and was admitted once before at the time of birth for around 25 days because of asphyxia, and at that time anti-epileptic drugs were started because of seizures, which were taught by the parents themselves around 2 to 2.5 years of age. His development according to the father, his development was age appropriate, but his activities of daily lives have been disturbed because of this illness episode, and he has not been going to school for the last 3 months. And also his behavior is kind of irritable. Okay, and the father is also complaining that the child has become anorexic, and his intake has been decreased a lot. The father is working as a salesman, and the disease has impacted them as a family, and in terms of finances. However, they plan to bear the expenses of the disease with the help of the family members. He has adequate knowledge of the disease and is concerned about his kid's well-being. Okay, Dr. Maheen. So, Dr. Maheen, what is your diagnosis based on this history, and what examination आप नहीं कर सकी थी, और लेकिन क्योंकि patient available नहीं था, so what is your diagnosis? On the basis of his history, as the patient has told me, he's been diagnosed with leukemia, blood cancer, and also there is glandular swelling associated with fever and night sweats. So this is possibly a case of malignancy, could be leukemia and lymphoma as well. Okay, can be case of leukemia or lymphoma. So what is usual presentation of leukemia? Leukemia usually presents with signs of bone marrow failure. It can present with recurrent infections, progressive pallor with easy fatigability, and it can present with bleeding that
diathesis like with petechiae, bruises, or epistaxis, or bleeding from any orifices of the body. Alongside, there can be anorexia and fever, weight loss. Okay, so do you think that if it is leukemia, it was a typical presentation of leukemia or not? No, typically it presents because leukemias are mostly in pediatric age group, they are acute. So they present early with acute marrow failure. While lymphomas usually having serious onset with glandular swellings and fevers and night sweats. Okay, so what are the differentiating points between leukemia and lymphoma? Any 2 or 3? Although there is significant overlap, but are there any differentiating features between leukemia and lymphoma? Again, the presentation, just like we discussed, the leukemias usually present acutely, while the lymphomas have mostly insidious onset. Then in leukemias, there is usually marrow involvement at the onset. So while in lymphomas, the bone marrow involvement is kind of a stage. Okay. Like it depends on the stage of the disease. Okay. Also lymphomas. Yes, sir. जी आप बताएं कुछ ऐड करना चाहती हैं ऐड करना चाह रहे थे what are the differences between like within the spectrum of leukemia, what are the differences between AML and ALL? AML and ALL. So in ALL, because mostly TLL is most common, it can present with a mediastinal mass with shortness of breath with facial swelling. While in AML, other features like depending upon the type of AML can be prevalent, like gum swelling, like a kind of AML can present with DIC type of picture. And अभी यही याद है. Blueberry muffin rash के बारे में सुना है? Yes, sir. Blueberry muffin rash. It's present in AML. AML. Proptosis के बारे में सुना है? Yes, sir. Proptosis. ठीक है. ये सारी चीजें 4-5 टिपिकल फीचर्स हैं जो कि AML के होते हैं. तो फौजिया? जी जी. ये 4-5 फीचर्स क्या होते हैं? भला AML के होते हैं और ALL के नहीं होते हैं? Proptosis. गम स्वेलिंग. ठीक है. ठीक है. ठीक है डॉक्टर महीन. ठीक है डॉक्टर महीन. How will you differentiate between T cell and B cell leukemia? For the T cell and B cell leukemia, we will have to go towards bone marrow biopsy. And first on CBC, in T cell leukemia, usually there is very high TLC count. Then on bone marrow biopsy, we can look for the morphology on the basis of staining. Like in AML, there is Sudan black and MPO, and in ALL, there is TDT, terminal deoxy transferase, I guess. Then immunophenotyping, the CD markers are different for BALL and TALL. It is like CD2, 3, 4, 3, 5, I guess. For TLL and for BALL. जब मैं आपसे जब लॉन्ग केस में सवाल होता है तो पहले आपने क्लिनिकल बताने होते हैं. ठीक है. ओके सर. इट्स गुड कि आपको सब कुछ याद है, लेकिन आपने क्लिनिकल डिफरेंसेस जो है पहले बताने हैं. एक तो क्लिनिकल डिफरेंसेस इस मींस कि कोई मोटी लैब इन्वेस्टिगेशन है वो आप बता सकते हैं, जैसे आपने बताया कि टीएलसी काउंट रेज होगा. ठीक है. जो कि आप अपने डीएचक्यू में बैठ के आप बता सकते हैं. ठीक है. चलें, और कोई क्लिनिकल फाइंडिंग है? Also, in TALL is associated with anterior mediastinal mass, yes. So the clinical presentation will vary. And TALL is more common in tall adolescents. Adolescent, ठीक है. तो एक तो एज का फर्क आ गया. TLL में बच्चा जो है वो बड़ी एज का होगा. दूसरी बात ये TLC काउंट उसका रेज होगा. थर्ड anterior mediastinal mass and it can present with shortness of breath. ठीक है. And visible veins. ठीक है. अच्छा, how will you differentiate? अगर suppose is a case of lymphoma, how will you differentiate whether in this patient he was having Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma? Okay, so in Hodgkin versus non-Hodgkin, first of all, non-Hodgkin's lymphoma is more common in pediatric population as compared to Hodgkin's. Secondly, in the non-Hodgkin lymphoma, there is involvement of
मुझे भूल गया पैटर्न लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. ठीक है. Small lymph nodes and aggressive course. Small, painless, and the course of disease is aggressive. This is the features of non-Hodgkin lymphoma. Also, there may be masses in head and neck and in the abdominal masses. ये सब जो है Hodgkin lymphoma के. Sorry, non-Hodgkin lymphoma के. जो Hodgkin lymphoma में lymph node size will be larger and disease course will be more prolonged और B symptoms इसमें काफी ज़्यादा prominent होंगे. जैसे कि weight loss और fever. ठीक है? Weight loss, fever और sweating, night sweats. ठीक है. Dr. Saib, how will you investigate this patient at this stage? At this stage, I will first of all review the previous labs which have already been done and see which labs are awaited. Then CBC with peripheral morphology because he has been recently transfused to look for his CBC indices right now. And then because PTINR as well, and for at this stage, prior to starting chemotherapy, we need to know his CNS staging as well. So that's why I have to do lumbar puncture. And then before starting chemotherapy, if there is high TLC count, then we have to do the workup for tumor lysis syndrome as well. Where we go for serum electrolytes, renal function tests, serum calcium phosphate levels. And other than that, for staging, like he said, CT abdomen CT has already been done but not specified. So I will see whatever is lacking and I will go for that. Okay. ठीक है. How will you manage your child? So management, I will first of all confirm the diagnosis and I'll counsel the parents regarding the disease. Suppose he's a case of leukemia. How will you manage now? Suppose he's a case. I will counsel the parents regarding the disease, its disease course, its management and its prognosis, and I'll admit the patient and start the patient on supportive medication and prepare him for chemotherapy. Like if it's anemic, I'll transfuse blood and then tell him about the hygienic measures, about the hand washing, about the oral care, and if the patient is at risk for tumor lysis syndrome, then I'll start him on hyperhydration along with allopurinol, and then once the results of the bone marrow biopsy are available, then we will start with the chemotherapy according to the results. Okay, Dr. Mahina, hyperhydration हर केस में आपने देनी है, ठीक है? Hyperhydration कितनी देनी है वो डिपेंड करता है कि it is a high risk patient or low risk patient. Now tell me, what is a high risk patient? High risk patients are depending upon the TLC count. And there are certain, like if the TLC count is more than 50,000, he's at the high risk for developing TLS. And also there are certain kinds of tumors which are more prone, like I have forgot the names, TL, and then there are certain types of BL. मुझे नाम भूल गए, कोई दो types होती हैं जो more prone होती हैं. चलिए, which chemotherapy will you give in the induction phase? In induction phase for leukemia. Yes. It's steroids, a combination of prednisolone with vincristine, methotrexate, which is given intrathecally, and there is, I guess, doxorubicin. I can't. Okay. And there is lasparginase, which we give in the patients which are high risk, I guess. No. इस तरह से है कि जो डोनोरूबिसिन है ना, डॉक्सो दी जाती है लिम्फोमा में, जो डोनोरूबिसिन है ये दी जाती है ल्यूकीमिया में, और उसमें भी हमने देखना है कि हाई रिस्क है तो फिर उसमें डोनोरूबिसिन देंगे. जो सब में देना है प्रेडिसोलोन, मीथोट्रेक्सेट और एलएस्पा, विनक्रिस्टीन, ये चार चीजें आपने सब में देनी है, ठीक है? चलें. अच्छा, what is the fate of this leukemia? Like, can there be any relapse of this condition after the treatment? Yes, sir. Relapses are common, and relapses are common. The most common is the bone marrow relapse, and then
then CNS, I guess, then testicular. BCS कर लिया आपने? चलो मैंने नमूनी बनाया, ठीक है ठीक है मुझे भूल गया। ठीक है। आप ये याद करें ना, टेस्टिस का लीस्ट कॉमन है, ठीक है ठीक है। तो बोन सबसे पहले हो गया, उसके बाद यानी बोन मैरो, उसके बाद फिर ब्रेन है और उसके बाद फिर टेस्टिस, ठीक है। चलो ब्रेन एंड टेस्टिस ठीक है ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि what is the most severe of these and which one is least severe of these? Bone marrow one is the most severe, and for that we have to go for another regime of more intensive chemotherapy or hematopoietic stem cell transplantation. Okay. And the testicular one is, I guess, least severe because we can give local radiation alongside chemotherapy. Okay. What will you monitor the patient during the follow-up? For follow-ups, first of all, CBC to look for again CBC indices for the blood counts, then and also for the blast cells, then bone marrow biopsy to look for the blast cells and their percentages. कितनी बार आपने bone marrow biopsy करवानी है? कितनी बार करवानी है? एक बार हो गई है, दोबारा करवाने की जरूरत है? करवाते हैं मुझे 15 डेज पे और फिर 29 डेज पे 15 डेज पे 29 डेज पे 30 जब एट द एंड ऑफ इंडक्शन। ओके, इसका है कि 28 डेज के ऊपर तो करवानी है, ठीक है। और दरमियान में जो है या तो 15 डेज पे करवाते हैं या फिर 8 डेज पे। अगर सीवियर है तो 8 डेज पे भी करवाई जाती है। आप अर्ली रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है। 8 डेज और 15 डेज और फिर 28 डेज के ऊपर आपने देखनी है। उस वक्त तक पेशेंट शुड बी फ्री ऑफ ब्लास्ट सेल्स। 8-15 वाली करवानी है, 8 और या 15 में से एक जरूर करवानी है और फिर 28 डेज पे जरूर होगी, ठीक है। और एक होगी एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट आइडियली, जो कि आमतौर पे नहीं की जाती, लेकिन एंड ऑफ ट्रीटमेंट भी एक होती है बायोप्सी के बिल्कुल ट्रीटमेंट के एंड होने पे आप एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो रिलैप्सेस है ना, ये 28 डेज के बाद जब भी रिलैप्स आएगा तो उसको रिलैप्स कहेंगे। ये नहीं कि पूरे 3 साल की ट्रीटमेंट के बाद रिलैप्स आएगा तो उसको रिलैप्स कहेंगे। जो दरमियान में 6 महीने बाद 8 महीने के बाद रिलैप्स आया, ये भी रिलैप्स ही है, ठीक है। ठीक है डॉक्टर महीन। आफ्टर इंडक्शन सर, आफ्टर इंडक्शन कोई भी रिलैप्स आएगा वो रिलैप्स ही काउंट होगा, ठीक है। चले, इसके अलावा बाकी आपने जो देख रहे हैं ना, गुड एंड बैड प्रोग्नोस्टिक साइंस आपको पता होनी चाहिए। तो हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया, टीएलसी काउंट कितना है, टी है या बी है, फिर मेल है या फीमेल है। मेल में प्रोग्नोसिस पुअर है। अच्छा, मेल में प्रोग्नोसिस पुअर है, आसान याद करने के लिए, मेल में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जहां पे जाके रिलैप्स होता है, इसलिए उसकी ड्यूरेशन भी लंबी है और उसका प्रोग्नोसिस भी पुअर है, ठीक है। ड्यूरेशन भी ट्रीटमेंट की 3 ईयर है, ये सिर्फ याद रखने की पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बी और टी सेल का फर्क है। फिर एज लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 10 इयर्स का प्रोग्नोसिस पुअर है, बिटवीन 1 and 10 इयर्स प्रोग्नोसिस गुड, ठीक है। उसके अलावा एंटीरियर मेडिस्टल मास का प्रोग्नोसिस पुअर है। इसके अलावा कुछ इस तरह की कुछ हाइपोप्लॉइडी की प्रोग्नोसिस गुड है, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी की जो प्रोग्नोसिस पुअर है, और इसके अलावा कुछ इस तरह की जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, तो जिस तरह फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की प्रोग्नोसिस पुअर है, ठीक है। IKZF की मेरे ख्याल में पुअर है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन है डिफरेंट, उनकी भी गुड और बैड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। वो उनमें से जिस हद तक आप याद कर सकते हो याद कर लें, ठीक है। चलें, ठीक है। विद डॉक्टर महीन, एक आपसे शिकवा रहेगा, आपने ओरल हाइजीन के बारे में नहीं पूछा और फॉलोअप के बारे में नहीं पूछा। फॉलोअप से वो मुझे समझ नहीं आया कि अब भी वो एडमिट हुआ है, तो मुझे पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए कि आपको क्या बताया गया, इस तरह से पूछ ले कितने अरसे बाद आपको कितने अरसे तक दाखिल करने का कहा गया और फिर उसके बाद कितने अरसे बाद बुलाया गया, ठीक है। अगर आप पूछ सकते हैं तो पूछ लें। और ओरल हाइजीन के बारे में भी आपने पूछना है कि आप सफाई का ख्याल रख लें, क्योंकि जो इंडक्शन में बच्चे होते हैं इनको बहुत ज्यादा बिल्कुल समझ लें कि जस्ट लाइक ICU में रखा जाता है, जहाँ पे हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाए, ठीक है। चलें डॉक्टर महीन, ओवरऑल योर हिस्ट्री वाज गुड एंड योर डिस्क्रिप्शन एंड नॉलेज वाज आल्सो अप टू द मार्क। थैंक यू सर। ठीक है, चलें कीप इट अप, और मुख्तलिफ लोग आपकी कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा कोर्स में, ठीक है। चलें, आज हमने मतलब तकरीबन सारे केसेस किसी न किसी तरीके से डिस्कस कर लिए, मुख्तलिफ ड्रिल्स के साथ, कहीं हिस्ट्री कहीं एग्जामिनेशन। यही 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपने देखे। मैं दोबारा बता देता हूँ, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मैलिग्नेंसी और इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये 4 मेन है,
और करना चाहे तो ITP, ठीक है, लेकिन 4 मेन जो पहले बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास, सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह।